Hello everyone. Hello everyone. So this side Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, आज जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली फार्माकोलॉजी टेस्ट के ऊपर है. So हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास विद इन 1 मिनट. So let others get joined. Okay. तो guys, क्या आप लोगों को अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज मेक श्योर आप मुझे बता सके. Is my voice is clear? All right. Yes, everyone, please join. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, guys. So please just join. Okay. Hi, ma'am. Yes. Okay. So, guys, जल्दी से join हो जाओ, please. जल्दी से आप लोग join कर जाओ. Okay. Let me send in the group. So, आप लोग प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर जाइए. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा फार्माकोलॉजी का टेस्ट. सो गाइज, इस लेक्चर के अंदर ये जो हमारा सेशन है, क्वेश्चन आपके सामने है. आप प्लीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. इसका जो आंसर है वो आपने मुझे बताना है. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये फार्माकोलॉजी के वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप डाटा रिवाइज करने के बाद हम सॉल्व करते हैं. सो आपका पूरा का पूरा मेडिकल लाइक होल मेडिकल सर्जिकल की जो फार्मा है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी. चाहे वो ड्रग्स आपके एंटी ट्यूबरकुलिन है, या फिर वो ड्रग्स आपके जीआई सिस्टम के हैं, चाहे वो ड्रग्स आपके नर्वस सिस्टम के हैं, कार्डियो के हैं. तो ये सारे कुछ कुछ एमसीक्यूज जो है वो आपको एसोसिएटेड विद मेडिकल सर्जिकल देखने को मिलेंगे. So we are going to start our class like within 1 minute. So I'm just waiting for others to get joined. Okay. All right. Okay. All right. So I can see we are total 8 here. Join all, guys. Join all. Let's solve the paper. All right. तो गाइस मैं स्टार्ट कर रही हूँ. ओके. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप लोग पूछ सकते हैं. आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं और मेरी वॉइस भी क्लियर है होपफुली. तो आप लोग प्लीज जो भी आपके डाउट्स हैं आप लोग मुझे उस टाइम पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके. नेहा यादव, CEF is correct. So option number C, option number D and F is correct. So according to Neha Yadav, option number C, E and F are correct. So let's see बाकी लोग क्या बोलते हैं. तो गाइस बताओ आप लोग. क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, आप आंसर मुझे बताना. ठीक है. A nurse provide discharge teaching for a client being treated with permethrin. Okay. Which client statement indicate the nurse? Okay. Which client is like statement indicate to a nurse correct understanding, okay, of a medication teaching session? So what do you think, like which client statement indicates to a nurse a correct understanding of a medication teaching session? So guys, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी जो जानकारी होनी चाहिए, that you should be aware of permethrin. ये क्या है, क्यों यूज होता है और क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. So Ruma Kalyan 356. So guys, the correct answer of this question will be option number A, option number B, E and F. These are the correct answers. I leave the cream on my hair for 10 minutes before rinsing it out. मुझे 10 मिनट तक के लिए वो क्रीम लगा के रखनी बालों में धोने से पहले. This is the correct option. Okay. And the cream may cause redness on the scalp and skin. Yes, इससे rashes या फिर irritation हो सकती है.
आई विल चेक माई फैमिली मेंबर बिकॉज दिस कंडीशन इज इजीली स्प्रेड। ये बहुत आसानी से जो कंडीशन है वो स्प्रेड हो सकता है, तो मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को भी चेक करना चाहिए कि उनको तो ये इन्फेक्शन नहीं हो गया है। एंड देन लास्ट, दिस मेडिकेशन शुड शुड लाइक मेक मी इचिंग स्टॉप। हो सकता है ये दवाई जो है वो आपको जो इचीनेस है उसको स्टॉप भी कर दे। So the correct answers will be option number 1, okay, option number 4, option number 5 and 6. रैशनल आपके सामने गाइस, आप लोग इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, दोबारा जब आपको पढ़नी होगी यू कैन पॉज इट एंड यू कैन रीड द रैशनल्स। Question number 2 in front of you guys. Question number 2. The nurse provides care for a client 8 hours after abdominal surgery. The client report pain and the nurse administer morphine 4 mg intravenous IV. 90 minutes later, the client report no relief from the pain. कोई उसको असर नहीं हुआ है. Which action by the nurse is appropriate? Which action by the nurse is appropriate? So what do you think? एक nurse provide कर रही है 8 hour after abdominal surgery हो चुके हैं client को, and the client report pain, उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसे IV जो है वो morphine दिया गया है, but ma'am this medication is used in night and in the morning, we have wash all beds, bed sheets and all. तो नेहा यादव यहाँ पे options तो कोई भी bedsheet को लेकर नहीं है, because your comment is not associated with any of the comments. तो जो भी आपके options हैं, अच्छा, I plan to wash all my bed linens with bleach, तो क्या यहाँ पर bleach और hot water के साथ लिखा हुआ है? You write it down wash, you just write it down wash करने हैं, बट क्या ये मेंशन किया गया है कि विद बेकिंग सोडा लाइक ब्लीच एंड हॉट वाटर के साथ क्लीन करना है, उससे क्या वो मर जाएंगे? लिनन शुड बी वॉश्ड in hot water and dried in dryer. However, it's not necessary to use bleach. I hope you got your answer, Neha Yadav. Isn't so, Neha Yadav? Right? So guys, हमको जो ट्रिक किया जाता है वो इन्हीं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पे किया जाता है. ओके ओके, गॉट इट. या सो हमको कैसे ट्रिक करते हैं, हमें पता है कि वॉश करना है, लेकिन क्या वो ब्लीच के साथ ही वॉश करना है? इफ यू आर नॉट श्योर, डोंट टिक द आंसर, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स, बिकॉज वो हमारे इन छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को ही ट्रिक करके ऑप्शंस को बनाते हैं और हम गलत कर देते हैं. सो दैट्स द आंसर. नाउ तो गाइस, उसको कोई रिलीफ नहीं हुआ है, अब क्या करना चाहिए? आप मॉर्फिन दे रहे हो और मॉर्फिन इज लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, ओके, एंड इफ स्टिल पेशेंट इज हैविंग पेन, देयर इज नो एनी resolve in the pain, so what you will do? What will be the action? So guys, you need to contact to the care provider. That's it, simple. आपको जाके physician से बात करना है. Okay, so now let's see the another question. Okay, let me show you the the rational. You can just pause the video and then you can just look and read the whole rational. Okay, all right. Next question guys. During a home health visit, an older adult, okay, an older adult Asian American client reports nausea and anorexia since taking isoniazid for 4 months. तो क्या आपको मालूम है isoniazid के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? Because if you want to answer this question, you must be aware of what are the basic sign and symptoms. So guys, ma'am, your mic is producing weird noise. Is it clear now? Is it clear now? Actually, my voice is very harsh. मेरी जो आवाज है नेचुरली वो बहुत हार्श है, वो बहुत मोटी जैसी है, तो कोई भी माइक में यूज कर लूं चाहे कितना ही अच्छा, मेरी वॉइस में थोड़ा सा वो बाउंस आता है. Yeah, now is it okay? All right, so what I'll do, I will just speak little low loud, so इसीलिए वो आराम से मैं बोलती हूँ, ठीक है? All right, so during a home visit, health visit, older adult Asian American client report nausea and anorexia since taking isoniazid for 4 months. 4 महीने के लिए वो ले रहा है. Which action will be the nurse take first? क्या करना है उसको? What do you think? These are the options. Yes, any idea? A. ये आई थिंक बहुत सारे हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स ने भी ए ऑप्शन किया था. टिक. गाइस, आइसोनियाजिड का स्पूटम कल्चर के साथ कोई लेना देना नहीं है. स्पूटम कल्चर इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस, जस्ट टू रूल आउट द ट्यूबरकुलोसिस. हरसिमरनजीत संधू सी. हरसिमरन,
स्किन कलर ऑफ द एब्डोमेन। तो गाइस जो आपका आइसोनियाजिड होता है वो हेपेटाइटिस लीड कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको टीबी हुआ है, बाद में उनके लीवर में डैमेज होता है। इट्स अ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग समवेयर एंड इट कैन लीड टू हेपेटाइटिस, आइसोनियाजिड एसोसिएटेड हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसोसिएटेड सिम्टम विल बी देयर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम विल बी देयर बिकॉज 4 महीने से कोई आइसोनियाजिड ले रहा है तो उसको हेपेटाइटिस एसोसिएटेड इश्यूज हो सकते हैं जो कि जीआई से एसोसिएटेड होता है। अब इन तीनों में जीआई से एसोसिएटेड कौन सा सिम्टम है? somebody is saying like skin color of the abdomen, नेहा यादव। और somebody is like inspect the hard palate because वो भी तो एक जीआई में आता है ना, माउथ सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट वो भी एक जीआई में आता है। But majority answer is like C. But guys, the correct answer is option number B. Rational. Sputum culture obtained for the diagnosis of tuberculosis. तो A तो आंसर है ही नहीं। The initiation of isoniazid but will not help the identification of or the isoniazid induced hepatitis. So guys, before the initiation of isoniazid but will not help with the identification or isoniazid induced hepatitis. तो sputum culture का कोई लेना देना नहीं है आपके isoniazid induced hepatitis के साथ। Due to biocultural skill variations, signs of early jaundice are the best observed on posterior hard palate of the people with the Asian descent. तो जो एशियंस होंगे उनके केस में स्किन के ऊपर तुमको इतना चेंज नहीं दिख पाएगा उस इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस का। हार्ड पैलेट पे आप देख सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, I hope it's clear. All right. Next. तो गाइज एक क्वेश्चन अब आपके सामने है। ओके, मैं इसे हाफ हाफ करके आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है, द नर्स प्रिपेयर अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट हु एक्सपीरियंस्ड एनाफाइलैक्सिस आफ्टर रिसीविंग अ डोज ऑफ पेनिसिलिन। ओके, सो आपने पेशेंट को पेनिसिलिन दिया है। विच स्टेप्स विल द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट टू टेक इफ एनाफाइलैक्सिस अकर इन द फ्यूचर? तो क्या होगा पेनिसिलिन का एनाफिलैक्सिस पे आप क्या क्या करेंगे? नंबर 1, एडमिनिस्टर 1 इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन, लीव द एपिनेफ्रिन इंजेक्टर, हैव 2 एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर अवेलेबल एट ऑल टाइम, ब्रिंग ऑटो इंजेक्टर इमरजेंसी डिपार्टमेंट और कॉल 911. व्हाट यू विल डू इफ देयर इज इमरजेंसी? प्लीज अरेंज एन ऑर्डर, ऑल द ऑप्शन मस्ट बी यूज्ड। एक्सपीरियंस्ड एनाफिलैक्सिस, तो आप सबको पता है कि एनाफिलैक्सिस शॉक के अंदर हम लोग एपिनेफ्रिन देते हैं, एवरीबडी नो दैट। बट यूजुअली एपिनेफ्रिन भी क्या करता है, कैसे यूज करते हैं उसको? सो गाइस द करेक्ट ऑप्शन विल बी, द सीक्वेंस विल बी हियर, हैव 2 एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर अवेलेबल एट ऑल टाइम, नंबर 1, administer 1 injection of epinephrine, then leave the epinephrine injector in place for 10 seconds, call 911 and then bring the used auto injector to the emergency department. Okay, so this is the correct sequence that you need to follow. Next question, a client receiving isoniazid, okay, rifampicin and ethambutol ask the nurse why the healthcare provider yani HCP has prescribed 3 medication. जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसने मुझे 3 दवाइयां क्यों प्रिस्क्राइब करी हैं? विच रिस्पॉन्स शुड द नर्स प्रोड्यूस? क्या लगता है आपको इसमें से नर्स को क्या बोलना चाहिए? व्हाट शुड शी से, व्हाट शुड शी मेंशन? Okay, so what do you think, what should she mention? So guys, you can see here there are some options. The combination of medications prevent the development of resistant in organisms. इसीलिए हम 3 दवाइयां आपको दे रहे हैं। तो ध्यान रखना है, ट्यूबरक्लोसिस is an infectious disease transmitted by droplet infection by a airborne route, airborne. Okay, to prevent the resistant stains, 2 or 3 medication are usually administered. Dependency ना हो, yeah, dependency, it's not these are not the dependent drugs. Resistance na ho, you can say like that, resistance na ho, yeah, that's correct. Now guys, question number 6,
A client diagnosed with peptic ulcer. Very, very important question. Very important question. The client diagnosed with peptic ulcer and ask if the over-the-counter antacid can be taken instead of isnomeprazole because of the cost. Which response the nurse will be the appropriate? ऐसा बहुत बार हुआ है, इवन हमारे डिपार्टमेंट में भी होता है, मैम ये बहुत महंगी आ रही है, क्या हम ये वाली खा लें? जैसे फॉर एग्जांपल पीपीआई के जो पेंटोपैराजोल वगैरह के टैबलेट्स होते हैं और जो पेंटोसिड होता है उनमें काफी अंतर होता है पैसों का. ओके, तो इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर और वो आपको बोलता है कि मैं दुकान से कोई ओवर द काउंटर एंटासिड खा लूं क्योंकि एसिड ही तो बन रहा है ना मेरे पेट में, तो मैं वो खा लेता हूँ. पीपीआई जो पीपीआई है बहुत महंगी आती है तो मैं ये नहीं ले रहा हूँ. सो व्हाट यू विल टेल देम? व्हाट यू विल टेल देम? सो गाइस लेट मी टेल यू, कभी भी जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं उनमें एंटासिड का कोई इतना रोल नहीं होता, क्योंकि जो पेंटोपैराजोल होता है, जो पीपीआई होते हैं वो आपके जो चैनल्स है सोडियम पोटेशियम जो पंप्स है आपके एचसीएल पंप है उनको ही ब्लॉक कर देता ताकि एसिड बने ही ना. इसीलिए पेप्टिक अल्सर में ट्रीटमेंट में पीपीआईज देते हैं, जबकि एंटासिड का उतना कोई रोल नहीं है. तो अगर वो इंसान ये सोचकर एंटासिड ले भी लेता है तो वो एंटासिड तो उसके पेप्टिक अल्सर को ट्रीट भी नहीं करेगा. तो आप क्या उसको बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. So guys, the answer will be I will call your pharmacy and find out the cost of omeprazole. मैं उनको पूछती हूँ पैसे कितने लगते हैं, omeprazole में कितने पैसे हैं. Esomeprazole help to reduce the acid, okay, and you will need to take it for several weeks to achieve healing. तो आपको लेनी है, ऐसा नहीं है आप इसकी जगह कोई और दवाई ले लेंगे. It is important that you avoid cigarette smoking क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पेप्टिक अल्सर को एसोसिएट करते हैं, तो आपको ये भी अवॉइड करना है. Notify the healthcare provider if have stools that are black and tarry, तो इसलिए भी आपको उस फिजिशियन को पूछना है. But try the antacid for few days. If you start to feel worse, call your health. No. You will not ask them to take, antacid. आप उन्हें antacid के लिए नहीं बोलेंगे. Antacid are not the treatment of choice. See, antacid are not the treatment of choice. Select all that apply is bit confusing. I know. But the thing is, आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा टिक आप उन ऑप्शंस को लगाएं with which you are absolutely like confident, and just आपको समझना है कि भाई पेप्टिक अल्सर में एंटासिड की ट्रीटमेंट में, पेप्टिक अल्सर में एंटासिड इट्स नॉट द ड्रग, इट्स नॉट द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट. तो ये तो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाता है. Volunteer to call the pharmacy, demonstrate the advocacy. So you are the advocate of your patient. So if you're calling, मैं कॉल करके पूछती हूँ कितने पैसे लगेंगे इसके. So that is the advocacy. तो वो एक क्रिटिकल एक आपका स्किल है. आप एडवोकेट होते हो पेशेंट के, तो समवेयर दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट यू आर एडवोकेट ऑफ द पेशेंट. कैफीन एग्जासर्बेट पेप्टिक अल्सर्स, एब्सोल्युटली वो अवॉइड करना है. एंड निकोटीन रिलीज इंक्रीजेस द स्टमक एसिड, तो स्मोकिंग भी अवॉइड करनी है. बैक कैरी स्टूल इंडिकेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो वो भी नहीं चाहिए हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द नर्स प्रोवाइड केयर प्लान फॉर साइकेट्रिक यूनिट. ठीक है, थोड़ा साइकेट्रिक पेशेंट है, यूनिट है. बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन द नर्स आस्क द क्लाइंट प्लीज अपना नाम बताइए. और उसने क्या बोला आपको कि आई एम द जीसस क्राइस्ट. तो वो अपने आप को कुछ क्या समझ रहा है? भगवान समझ रहा है. तो आपका क्या इसके अंदर एक्शन लिया जाएगा? आप क्या करोगे? व्हाट डू यू थिंक? अगर वो अपना नाम जीसस क्राइस्ट बता रहा है, क्या पता उसका नाम सच में जीसस क्राइस्ट हो. क्योंकि कई बार होता है ना, आपका नाम क्या है तो वो कहता है ओम. इन केस अगर उसने बोला माय नेम इज ओम, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ही इज लाइक मैड एंड ही इज नॉट ओम. ये भगवान का जो ओम है वो थोड़ी ना है ये. तो गाइस सबसे पहले क्या करना है भाई? सबसे पहले होता है उसको असेस करना. चेक द आईडी बैंड. उसका नाम है क्या सच में? क्या सच में उसका नाम क्राइस्ट चर्च है क्या, या जीसस है, जो भी है. तो you need to just make sure what is the name. Just look into the ID band. So you can see the options over here. The answer will be look at the client's armband. That's the ID band. So the UAPs are not needed. There is no indication that the client is aggressive. तो आपको यहाँ पर जो unlicensed assisted personnel होते हैं उनको बुलाने की जरूरत नहीं है. And the hospital Kaplan will not be able to identify the client for the nurse. So this action does not address the problem. तो आपको उसका आईडी बैंड चेक करना है एंड यू विल गेट टू नो व्हाट्स हिज रियल नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस.
adult child of a client diagnosed with Alzheimer diseases ask if the prescribed medication will improve dementia. What do you think? अगर किसी को अल्जाइमर होता है, अल्जाइमर डिसीज में डिमेंशिया इंप्रूव होता है क्या? अल्जाइमर की अगर आप किसी को ट्रीटमेंट देते हो तो क्या डिमेंशिया भी इंप्रूव होता है? तो गाइस, अल्जाइमर इज डिफरेंट, डिमेंशिया इज डिफरेंट. ओके, बोथ आर डिफरेंट कंडीशंस. अल्जाइमर की दवाई से सिम्टम थोड़े कम हो सकते हैं बट मैनेज तो नहीं होगा. So it will help the client to live independently once more. No, 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 no. That's not true. It is used to stop progressive Alzheimer disease, but will not cure it. No, it will not stop the progression. It will not improve dementia, but can control the symptoms. वो बस symptoms को control कर सकता है, but वो पूरे तरीके से जो है वो आपका कंट्रोल कर सकता है, बट पूरे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बस मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ. ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन नहीं था. जो मैंने कल टेस्ट लिया था उसमें, कल या परसों जो भी लिया था, कल लिया था, उसमें ये क्वेश्चन नहीं है. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट. द नर्स प्रोवाइड केयर टू अ क्लाइंट प्रिस्क्राइब्ड डाइफेनाइलहाइड्रामीन. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डाइफेनाइलहाइड्रामीन. Which client condition causes the nurse to question the prescription? So the nurse provide care to a client prescribed diphenylhydramine. Which client condition causes the nurse to question the prescription? Close angle. तो guys आपको पता होगा diphenylhydramine क्या होता है. Diphenylhydramine is particularly your anticholinergic effect. Okay, so it's an anticholinergic drug और cholinergic system का काम होता है आपके जो pupils हैं उनको क्या करना है, कंस्ट्रिक्ट करना है. लेकिन आप क्या दे रहे हो, एंटीकोलिनर्जिक दे रहे हो. एंटीकोलिनर्जिक यानी आप जो उसकी आईज की जो मसल्स हैं जो है उन्हें आप डायलेट कर रहे हो. और अगर कोई इंसान ग्लूकोमा से सफर कर रहा है उस केसेस के अंदर इट इज लाइक वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक. सो आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर उस पेशेंट को ग्लूकोमा है और आप उसे ये ड्रग देने वाले हैं, यू कैन आस्क द फिजिशियन. यूरिनरी रिटेंशन है तब भी आप पूछ सकते हैं. पेप्टिक अल्सर है तब भी आप पूछ सकते हो कि आप डाइफेनाइलहाइड्रामीन क्यों दे रहे हो. स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्यों दे रहे हो. क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक का काम होता है बाउल मूवमेंट को फास्ट करना, एक्टिवेट करना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट. लेकिन अगर आप ये ड्रग देते हो तो इट विल ब्लॉक द रेस्ट एंड डाइजेस्ट. सो इफ समबडी इज हैविंग पेप्टिक अल्सर इट विल मेक इट मोर वर्स. ओके, तो जो सिक्रीशंस है वहां पे वो ड्राई हो जाएंगी और अल्सर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे क्योंकि कोई म्यूकस ही नहीं है वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. क्योंकि रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन में म्यूकस बनता है. जब वहां पे रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन ही नहीं है वहां पे म्यूकस ही नहीं है. जो वहां पे म्यूकस ही नहीं है तो अल्सर्स हो जाएंगे. इसीलिए डाइफेनाइलहाइड्रामीन जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है उस केस में आप बिल्कुल भी पेशेंट को क्या नहीं देते हैं, आप बिल्कुल भी पेशेंट को ये जो ड्रग्स हैं उनके साथ पेप्टिक अल्सर वाले लोगों में ये ड्रग नहीं देते हैं. यूरिनरी रिटेंशन में भी नहीं दोगे क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट में आप यूरिन पास करते हैं, उसका ऑलरेडी यूरिन रिटेन हो रहा है, आप ये ड्रग और उसको रिटेन करने के लिए दे रहे हो. दैट्स आल्सो रॉन्ग. Small bowel obstruction. Small bowel obstruction. So guys, just give me a second because I can see that. Okay. Because there are a lot of people who are not live. So guys, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लाइव नहीं हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप पे आंसर की अपनी सॉल्व कर सकते हो. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट लाइव. जो लोग लाइव है यूट्यूब पे उन्हें तो कोई जरूरत नहीं है, जो लोग लाइव है उन्हें जरूरत नहीं है, बट जो लोग लाइव नहीं है प्लीज अपने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लो. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. A client report to the nurse. A client report to the nurse. I'm tired of taking medication. At least आपको कुछ information तो मिलेगा. तो just be live, okay? जो लोग समीक्षा, I think you are already live, right? So जो लोग already live हैं उनको आने की जरूरत नहीं है. A client report to the nurse. I'm tired of taking medications all day, all the time. I stopped taking all of them. मैंने रोक दी है सारी दवाइयां, मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, मैं कोई medications नहीं ले रहा हूँ. The nurse note that the healthcare provider had prescribed Atenol 100 mg every day.
Which question is most appropriate for the nurse to ask? Atenolol, beta blocker. So guys, have you had any episodes of palpitation and profuse sweating is the correct answer. Okay, so this will be the correct answer. Next question, question number 12. The nurse provide care for a client diagnosed with heart failure. Which client statement indicate to the nurse that medication therapy is effective? Medication therapy is effective. Select all that apply. Okay. So what do you think? जो patient heart failure में है, कौन सी medication therapy effective होगा? What do you think? So you need to tell me. Since I have been taking captopril, my feet are not puffy. Yes, that's true. Captopril is your ACE inhibitors. और ACE inhibitor लेने के बाद body से fluid बिल्कुल बाहर हो जाता है, तो somewhere they will not feel puffy. That's true. Taking spironolactone has kept my pulse less than 60. No, that's wrong. Spironolactone से heart rate का कोई लेना देना नहीं है. Lisinopril seems to help me not be as a short of breath. Lisinopril is also your ACE inhibitor and it also has not that much, relationship with your breath, but not be a short of breath. हाँ हो सकता है क्योंकि फ्लूइड को कम कर रहे हैं ना, तो हो सकता है जो पल्मोनरी एडीमा उसको हो रहा है वो फ्लूइड बॉडी से बाहर फेंक दे और कहीं ना कहीं उसको सांस लेने में थोड़ी सी मदद मिले. Before now that I'm taking carvedilol, I don't have palpitations. Before taking valsartan, I had to stop and rest while cooking. I seem to urinate more when I take digoxin. So guys, what do you think? What will be the answer? Just give me the correct answer. Give me the correct answer. तो आपको क्या क्या लगता है? Which client statement indicate कि उन्हें समझ में आ गया है? So option number 1 is correct. Option number 3 is correct. And your 5 and 6. So since I have been taking captopril, my feet are not puffy. That's true. Lisinopril seems to help me not as short of breath. Before taking valsartan, I had to stop, rest while cooking. Okay, and I seem to urinate more than I take digoxin. That's correct. So now what is the feedback? आप देख सकते हैं, these are the feedbacks. आप इसको वीडियो को यहाँ पे रोक कर आप इसे रिवाइज कर सकते हैं. कुछ भी डाउट आपको तो समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो. Yes, top listed Neha Yadav, Harsimranjeet. Guys, is it clear? Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? Please just let me know in the comment box. Yes, Harsimranjeet. Okay, thank you so much, Harsimranjeet, for just letting me know. Okay, perfect. All right. Now let's next question. Next question in front of you. The nurse provide care for a client with psychiatric unit. The nurse concerned if the client receiving phenylzine sulfate eat which menu items. तो guys, रंजना पठानी. Yes, okay, that's great. तो guys, जो लोग भी psychiatric unit में हैं और वो लोग phenylzine करके टैबलेट को इनटेक कर रहे हैं, सल्फेट खा रहे हैं, तो उसके साथ क्या दोगे आप? तो यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस देख सकते हो. रोस्ट बीफ, सैंडविच, फ्राइड, बट यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी दी ब्रेड. तो ब्रेड के ऊपर चीज लगा के आप उस पेशेंट को दोगे. गुड हरसिमरनजीत, वेरी गुड हरसिमरन. द आंसर विल बी द डी. हरसिमरनजीत, रियली गुड. आपके मेजॉरिटी ऑफ आंसर सही होते हैं. आई एम रियली हैप्पी. या जनप्रीत. सो ग्रिल्ड चेडार कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक अ नेचुरल चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. The nurse provide care for a client in psychiatric unit. हाँ, मैंने बता दिया ना इसका आंसर. This will be the answer. आप पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो, बाद में जो आप देखेंगे and you can just revise this. Next question. Yes, what will be the answers? The nurse supervise a team of LPN, LVN. The nurse intervene if an LPN, LVN allows a client to take leukotriene pills when which medication is administered. Guys, आपको मुझे बताना है. So you have to tell me. Okay. All right. So the nurse supervises a team LPN, LVN. The nurse intervenes if a LPN, LVN allow a client to take leukotriene pills. Then with which medication is administered? So guys, आपको ध्यान में ये रखना है. पहले तो आपको पता होना चाहिए what is leukotriene pills. What are these? और उसके बाद कौन सी मेडिकेशन आपको एडमिनिस्टर जब करनी है उस एलपीएन पे नजर रखनी है.
तो गाइज ये जो पिल होती है, लिकोराइज पिल्स जो होते हैं, ये पर्टिकुलरली आपके पोटेशियम को थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। तो आपने फ्रूसेमाइड भी हाइपोक्लीमिया करता है, प्रेडनिसोलोन एंड पोटेशियम क्लोराइड देते वक्त आपने नजर रखनी है। So you can see these are three will be the correct options. It is safe to administer licocaine along with promethazine. Promethazine के साथ देने में ये safe होती है, no issue. Antihistamines, antiemetic, the drugs do not intervene in this situation. Okay, it is safe to administer licocaine along with brufen, non-steroidal. But guys, ये लिकोकेन जो होती है वो हाइपोक्लीमिया करती है, तो पोटेशियम क्लोराइड के साथ थोड़ा सा देखना है, फ्रूसेमाइड के साथ भी देखनी है और आपके प्रेडनिसोलोन के साथ भी देखना है, क्योंकि सब आपके पोटेशियम के लेवल को ऑल्टर कर सकती है। तो इसीलिए जो आपकी लिकोराइज है ड्रग है, मतलब जो पिल्स है, इनके साथ आपको इन तीनों ऑप्शंस के साथ थोड़ा नजर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse note that the client has prescription to receive fluoxetine, okay, and which herbal supplement will the nurse teach the client to avoid because it interact adversely with this medication? क्या लगता है आपको ये जो आपकी ड्रग है फ्लॉक्सेटिन, ये क्या है और कैसे ये अफेक्ट कर सकती है? तो गाइस मैं बता देती हूँ आपको, फीवर फ्यू एनकिया एंड योर वेरलिन विलारियन एंड योर स्टीफन जॉन वॉट, इन चारों के अंदर जो आपका स्टीफन जॉन वॉट है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाई? सो या गुड रंजना पटानिया, डी हरसिमरन डी, दैट्स गुड। So guys, the reason behind is client can use fever few to prevent migraine headaches. Okay, client can use Encaya to suppress the immune functions. Client can take Viralin to promote sleep. Client with use steam John wort to treat mild and moderate depression. So can adversely interact with the fluoxetine. तो इसके साथ बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से वो इंटरेक्ट कर सकती है, जो कि और ज्यादा ट्रांसमिशन करेगा, सीरोटोनिन ट्रांसमिशन दैट लीड टू सीरोटोनिन सिंड्रोम। दैट्स वाई जस्ट मेक श्योर आप इसके साथ देने से पहले अवॉइड, बिकॉज इट कैन इंटरेक्ट, तो इसके साथ अवॉइड करें, आपको नहीं देना है। Next question, guys. Question number 16 in front of you. Question number 16. Okay, you can pause the video. The nurse visit the home. Client prescribed phenytoin 8 weeks ago for tonic clonic seizures. Which statement required immediate interventions? Yes. I'm going to give you 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, the correct answer will be option number 2, 3, and 4. The correct answer will be option number 2, 3, and 4. Why? Here is the rationale. Phenytoin is contraindicated in pregnancy. तो कोई लॉजिक ही नहीं है। The rash में phenytoin hypersensitivity से rashes हो सकते हैं। Okay? And think driving, क्योंकि आपकी इस ड्रग को लेने के बाद, योर phenytoin को लेने के बाद suicidal thoughts आते हैं लोगों के अंदर। So if somebody is saying I'm just going to cliff is the cliff, उसको बोलते हैं जो माउंटेन का एज होता है, जहां से कोई छलांग मारता है पानी में, यू नो, लाइक जस्ट डाइव कर रहा है कोई या कुछ कर रहा है, तो वो क्लिफ होती है वो माउंटेन की, वो लास्ट पोर्शन, लास्ट पार्ट, द टिप, दैट इज अ क्लिफ। तो अगर वो बोल रहा है कि भाई मैं तो छलांग मार दूंगा वहां से नीचे क्लिफ से, तो दैट इज लाइक लिटिल बिट डेंजरस, it's dangerous, you need to consider this. If I start having a nurse, I stop taking the phenytoin immediately. तो guys, abruptly discontinue नहीं किया जाता है, वो सीजर कर सकती है। तो phenytoin के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। It's very very important question. Next question in front of you. The client has prescription for hydrochlorothiazide, that's thiazide diuretics. Which client statement indicate the nurse teaching is successful? इनमें से कौन सी ऐसी बात बोली गई है नर्स द्वारा, सॉरी पेशेंट द्वारा, कि नर्स को लग रहा है कि सही है, he is smart. So what do you think? Yes, everyone? Yes, the correct answer will be okay, so orange juice, I should eat dried apricot. Yeah, that will be the correct answer. क्योंकि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड आपके प्रोटीन को काफी कम कर देती है, एंड एप्रिकॉट ईच खाने से काफी बेटर फील होगा। सो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड थायराइड डायरेटिक्स होते हैं, ये ड्राउजीनेस नहीं करते हैं, इनके साथ पानी पीना होता है, दैट्स ट्रू। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड डज नॉट ऑल्टर anything with the color. So loss of potassium बहुत हो जाता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड में, तो एप्रिकॉट खाने से लॉस ऑफ थायराइड जो काफी सॉल्व होगा। सो यू हैव टू this is the correct answer. Next question number 18. तो गाइज आपने ब्लड पेशेंट को दिया और ब्लड देने के बाद उसका बीपी कम हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया, एंड लगभग 15-20 मिनट के अंदर अंदर सिम्टम देखने को मिल रहे हैं।
Yes, Roger Munde. Hello, ma'am. I really love your videos. Please upload videos of OSCE stations, especially the blood transfusion, reaction management. Thank you so much. Sergio Murlia, basically, we just try our best to upload videos, okay? But we cannot upload all the stations because we run course, the online course for OSCE. So if we will put all the videos on like online on YouTube, then our coaching will be like completely YouTube coaching. So that's the reason we don't upload all the videos. Okay, but I usually upload a lot of points. How much is the course fee, ma'am? So Roger, you can message us on Instagram. Okay, like, or you can contact us on IRN channel. We will let you know, okay, because it's confidential, because it's pretty high. So मैं नहीं चाहती बाकी लोग सुनकर डर जाएं, तो इसीलिए the price is not that much high. It's little bit high as per foreign like very very costly, but we charge high but not that much high that you will not afford. We charge जितना इंडिया में एनक्लेक्स के लिए चार्ज किया जाता है उतना हम ऑस्की का चार्ज करते हैं. Just imagine. So just like that. Thank you so much, Sirolgia. Yeah, that's fine, Sir Gio. Thank you so much. So, okay, so if patient had BT reaction, then what will be the sequence? So, guys, in OSCE, usually the sequence is like stop the blood and then call the physician and then ask the vital signs or assess the vital signs and then manage the patient. But in NCLEX, it's different. Okay, in NCLEX, the number one thing that you're going to do is stop the blood. Obviously, you need to stop the blood. Have the patent IV line. Okay. Thank you so much, ma'am. Yeah, it's okay, Sir Joy. Thank you so much. So, hand a new intravenous infusion set. That will be the second step. Begin 0.9 sodium chloride infusion. That will be the third step. And then same, call the physician, check the vitals, and then obtain the blood and urine specimen. So this will be the sequence. Now let's solve another question, guys. So the question in front of you, it's about lithium carbonate. So what do you think? Lithium carbonate हमारे पास 600 mg दिया आपने माउथ 3 times a day. नर्स होल्ड द नेक्स्ट डोज. क्यों होल्ड कर दी उसने नेक्स्ट डोज? इनमें से कौन सा सिम्टम देखने से उसने नेक्स्ट डोज होल्ड कर दिया? सीरम लिथियम लेवल, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, fine hand tremors, loose stool. What do you think? C, fine hand tremors. So guys, the answer will be, what do you think? Yes, Ruma Kalyan, option number C. So majority people are saying option number C. तो गाइस सबसे पहले तो ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता क्योंकि जो नॉर्मल रेंज होती है इट इज लाइक 1 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी नॉट द करेक्ट आंसर. इंक्रीज यूरिन आउटपुट का लेना देना नहीं है यहाँ पर. फाइन हैंड ट्रेमर्स will be the not the correct answer. The option number D will be the correct answer. Loose stool. Now why? Let me give you the rationale. So guys, diarrhea is a sign of lithium toxicity. तो अगर किसी इंसान को लिथियम आप दे रहे हैं and somewhere they are experiencing like होल्ड कर देना आपको अगला डोज क्योंकि वो टॉक्सिसिटी में है. तो अगर कोई पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो इट्स मीन इट्स इन टॉक्सिसिटी. और क्या क्या सिम्टम होते हैं? ओवरसीडेशन, ataxia, tinnitus, slur speech, muscle weakness, twitching. Withhold the dose. Okay. Hand tremors, fine hand tremors, frequent expected effects. ये नॉर्मल है, मतलब होता ही है लिथियम लेने के बाद. इसे कहते हैं लिथियम ट्रेमर्स. तो व्हाट आई एम फीलिंग गाइस कि आप लोगों को आंसर्स पता है, यू हैव रेड द डाटा, बट एमसीक्यू सॉल्व ना करने की वजह से वो जो छोटा सा पतला सा लाइन होता है ना, लाइन डिफरेंस, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका. So lithium tremors are normal expecting tremors. So you will not withhold the dose. You will only withhold the dose when there is a lithium toxicity. And diarrhea is one of them. Ataxia is one of them. Tinnitus is one of them. Slur speech is one of them. Okay? All right. So the nurse provide education about influenza treatment. Prevention at a local, at a local health fair. Which statement from a participant demonstrate correct अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओसल्टामावीर? तो गाइस आपको शायद याद होगा मैंने इन्फ्लुएंजा फ्लू, स्वाइन फ्लू में ओसल्टामावीर पढ़ाया था. उसी को लेके बोल रहा है कि इसमें से कौन सी बात बोलने से ऐसा फील होता है कि वो सही बोल रहा है. उसको समझ में आ गया जो भी आप समझाना चाहते हैं. I will begin taking the medication as soon as I experience flu symptoms. The capsule must be swallowed whole, never opened. नहीं, that is wrong.
दैट इज रॉन्ग। हम हमेशा कैप्सूल को खोलते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, खाने के साथ मिक्स करते हैं और फिर खाते हैं, हमेशा तो नहीं, बट ज्यादातर। इफ द मेडिकेशन अपसेट माई स्टमक आई कैन टेक इट विद फूड। चिल्ड्रन यंगर देन 12 शुड नॉट टेक द मेडिकेशन। नहीं नहीं नहीं, ज्यादातर इन्फ्लुएंजा लेस देन 12 यंगर लोगों में ही होता है, तो ये तो देना है उनमें, रोकना नहीं है, देना है उनको। After I complete the medication, I will not need yearly flu shot. I should not take this medication if I'm allergic to eggs. So guys, what do you think? What will be the correct answer? The nurse provide education about this. And which statement participant never correct understanding. सही बोल रहा है वो. So guys, option number 1 is correct. If I will begin taking medication as soon as I experience flu. Option number C is the correct answer. That medication मेरा पेट अपसेट कर सकती है, तो मुझे खाने के साथ खाना है उसको. And children younger than 12 years should not take. Nahi, they should take. So this is wrong. So option number 1 and C are the correct answers. This is the rationale. You can stop the video over here and you can read the rationale. Next question number 21. The client received gentamicin. तो guys ये भी हमने पढ़ रखा हुआ है. 8 hours IV leg infection. The nurse touches the client shoulder where there is no response of breathing. Client jump and act startled. What do you think? क्या करना है? ये क्या इसमें से ऑप्शन होगा? Which action by the nurse is the most important here? Ask what is she thinking. Monitor the color and sensation of the legs. Obtain the client temperature. Check the client tinnitus and hearing loss. तो guys मैंने पढ़ाया था जेंटामाइसिन आपका ओटोटॉक्सिसिटी करता है. So if patient is complaining for tinnitus and such kind of stuff, it means patient is this is the most important point you will make sure. So the answer will be check the client for tinnitus because gentamicin is ototoxic. Very good answer, Ranjit. That's good. Ototoxicity. Next question, guys. The nurse provide pregnant receiving magnesium sulfate preeclampsia. क्या करोगे? Calcium gluconate. ये तो सब लोग जानते हैं. Question number 23. So ऑक्सीटॉक्सिन दे रहे हो और कॉन्ट्रैक्शन जो बहुत ज्यादा सस्टेन कर रही है वो भी 2-2 मिनट. What you will do? What you will do? Okay, so what you will do? Okay. Harsimanjeet A. Exactly. You wanna discontinue the IV toxin. Very good, Harsimanjeet. Next question in front of you guys. Next question. ट्रीटमेंट बायपोलर डिसऑर्डर में लिथियम दे रहे हो और लेवल कितना है 1.7. कितना लेवल मैंने बताया? मैंने नॉर्मल लेवल बताया 1 to 1.5. ये तो लेवल ज्यादा है. क्या करेंगे? एडमिनिस्टर द नेक्स्ट डोज? नो, यू कैन नॉट एडमिनिस्टर द नेक्स्ट डोज. Okay, so we will notify to the practitioner. Okay, very good. So we will notify to the practitioner. Next question. Question number 26. Yes guys, give me the answer. You can hold the question, read the question because हमारा almost 1 hour होने ही वाला है and इस तरीके से हम कर नहीं पाएंगे. So what I'm going to do, you can pause the question and just let me know the answer. Oxycodone painkiller होता है. It's a painkiller, strong painkiller. Which possible effect? Report the nurse immediately. अगर पेशेंट का क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि ये पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकता है. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पेशेंट को हार्ट फेलियर है. हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब द ड्रग डोज. क्वेश्चन, कौन से इनमें से ड्रग को हम क्वेश्चन कर सकते हैं? सो गाइस हम लोग फ्यूरोसेमाइड देते हैं, डिजॉक्सिन भी देते हैं, ऑक्सीजन. हम विरामिप्रिल नहीं देते पेशेंट को. सो वी कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर 3. हियर इज द रैशनल. Next question number 5. Nurse teaches the patient client to prescribe at atomoxetine. Which information does the nurse include the teaching? तो आपको पता होना चाहिए cofloxacin, atomoxetine उसी कैटेगरी की ड्रग है और आपको इनमें से कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं. Information. There is a low risk of dependence with this drug. Your child may take amoxicillin with or without food. Record your child weight weekly. Offer your child fresh fruits, vegetables. Amoxicillin should not be taken child under 95 pounds. Risk the suicidal thoughts may occur in child with taking this. तो guys इनके करेक्ट आंसर सबसे पहले तो ये होगा. Amoxicillin should not be taken by children under. नहीं, ये गलत बोल रहा है. Amoxicillin जो होता है this is the wrong. Only this one is wrong. बाकी सारे के सारे आंसर सही है. तो इसकी लो डिपेंडेंसी है. विदाउट फूड विद फूड खा सकते हो. चिल्ड्रन का वजन बढ़ता है. इसीलिए नॉट टेकन बाय चिल्ड्रन नहीं, इट शुड बी टेकन बाय चिल्ड्रन जिनका 95 पाउंड से कम वजन है उनको देना है. तो इट इज रॉन्ग. ऑल आर करेक्ट आंसर्स. ओके, हियर इज द रैशनल. हियर इज द रैशनल.
You can pause the video and you can just look into the rationale. Next question in front of you. Next question in front of you. The nurse evaluate client with type 1 diabetes. Which observation indicates the client is not rotating insulin injection site? अगर उसका ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो साइड को रोटेट नहीं कर रहा है और जो वहां पे ग्लूकोज है वो वहीं ब्लड में ही घूम रहा है, सो इट्स नॉट वर्किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेशेंट को आईएम इंजेक्शन हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक. ओके, सो क्लाइंट को फीवर बहुत हो गया है, हार्ट रेट भी बढ़ी हुई है, मसल में रिजिडिटी है, इनकॉन्टिनेंस भी हो रहा है. व्हाट यू थिंक, क्या है पेशेंट को? सो गाइस, दिस इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम. दिस इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम. रैशनल आपके सामने है. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन लुक इनटू द रैशनल. Question number 28. Client diagnosed with type 1 diabetes. Receive insulin 30 unit insulin 8 unit morning. तो गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए है कि जो 32 यूनिट है वो आपका ह्यूमन रिकम्बिनेंट है. ओके, एंड रेगुलर 8 यूनिट है. तो हमेशा पहले क्या देते हैं हम लोग? 8 यूनिट देंगे. सबसे पहले रेगुलर इंसुलिन देंगे जो कि क्लियर होता है. उसके बाद आप रिकम्बिनेंट इंसुलिन यानी कि उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग जो होता है वो उसके बाद दोगे. तो 32 टोटल 40 यूनिट आप दोगे. 8 यूनिट पहले दोगे, 32 यूनिट बाद में दोगे. तो पहले क्लियर यूनिट दिया जाता है, फिर आप क्लाउडी आप देते हो. सो क्लाइंट एड द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सिरिंजेस. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. सबसे पहले द क्लाइंट ड्रॉ 32 क्लियर इंसुलिन, 8 यूनिट ऑफ क्लाउडी इंसुलिन, टोटल 40. ओके, सो दिस इज पर्टिकुलरली विच एक्शन परफॉर्म बाय द क्लियर इंटरवेंट. तो ये बात इसने गलत बोली है, इसीलिए उसने क्या बोला, इसमें से कौन सी बात उसने गलत बोली है? उसने एक बात गलत बोली है, ये वाली. 32 क्लियर नहीं है, 8 है क्लियर. So this is the wrong answer. So this is the correct according to the question. This is the rational. You can pause and then let you know. Question number 29. Client receiving lithium. Which dietary instruction? तो guys, जो भी लोग लिथियम लेते हैं उनको हम सोडियम खाने को बोलते हैं और नॉर्मल डाइट लेने के लिए बोलते हैं. So regular sodium intake and adequate fluid intake. This is will be the correct answer. Option number C. Rational आपके सामने. You can pause it and you can just look into the rational. Question number 30. The nurse assesses the lithium finding indicate the nurse experiencing early toxicity. मैंने तो बताई दी lithium की toxicity, ataxia, you know, and patient will be having diarrhea. So early में nausea, vomiting, diarrhea आएगा. So the correct answer will be option number C. Option number C will be the correct answer. Yeah, it's C. This is the rational. You can pause and have a look. क्वेश्चन नंबर 31 गाइस. क्वेश्चन नंबर 31 लीवोथायरॉक्सिन. तो सब लोग जानते हैं ये थायराइड में दी जाती है और जो हार्मोनल आइडोल प्रोड्यूस या फिर मेडिकेशन एनर्जेटिक थायराइड लेवल्स. व्हाट डू यू थिंक? तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर लास्ट एंड ऑप्शन नंबर 3. दीज आर द करेक्ट आंसर्स. आई विल बी फील मोर एनर्जेटिक क्योंकि लीवोथायरॉक्सिन एक थायराइड हार्मोन है. आई विल टेक दिस मेडिकेशन एम्प्टी स्टमक. हमेशा खाली पेट सुबह हम अर्ली मॉर्निंग देते हैं. दिस मेडिकेशन रिप्लेस करेंगे उन हार्मोन्स को जो हार्मोन्स बन नहीं पा रहे हैं. नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 32. अब मैं डायरेक्ट आंसर्स आपको बता रही हूँ. ओके, रैशनल भी मैं आपको दिखा दूँ. क्वेश्चन नंबर 32, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. यू कैन पॉज इट एंड दिस इज द रैशनल. यू कैन पॉज इट. क्वेश्चन नंबर 33, द क्वेश्चन इज दिस. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. द रैशनल इज इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. Question number 34. So question number 34 is here. The answer will be option number 1 and the rational is in front of you. Question number 35. The question is in front of you. Okay. And the answer will be option number 1, 3, 4 and 5. And the rationals will be here. You can pause it. Question number 36. The question is here. The answer will be option number C. This is the rational. Question number 37 in front of you. You can pause the video after this class. You can pause the video and then solve the question. And then these are the correct answers. And here is the rational. Question number 38. Piperacillin. This is the question. This is the correct answer. Check for the known allergies of the medications. And this is a rational. Okay, you can pause it. Question number 39. This is the question. These are the answers.
and this is the rational. Question number 40, this is the question. These are the answers. This is the rational. Question number 41, this is the question. These are the answers. And this is the rational. Question number 42, this is the question. This is the answer. And these are the rationals. Question number 43, this is the question. This is the answer. And this is a rational. Guys, we won't be able to share this in the group, okay? We are not going to share this in the group. This will be always available on your YouTube on our channel. So whenever you want to solve, just watch it, okay? We'll not share this thing in the group. We have already shared the question paper in the group. So the answer key, whenever you want to solve the answer key, please come and watch this video, okay? वैसे तो आपको पता लग ही गया आंसर्स क्या हैं, but I have already shared the question paper. So for answers, you can come and just watch the video. Question number 41. A client prescribed to receive a dose of nifedipine has a pulse rate of 50 beats. This is the question. This is the answer. Withhold the medications. And this is the rational. So whenever you want to solve this question, come here and just watch the video. Question number 45. This is the question. This is the answers 1, 4, 1 and 5 and 6. And this is the rational. Question number 46. Question, answer, and rational. This is the question. Question number 47. This is the answer, and these are the rationals. Question number 48. These are the questions. These are the answers, and these are the rationals. Okay? Question number 49. This is the question. This is the answer, and this is the rational. Question number 50. This is the question. This is the answer, and these are the rationals. Okay? Next 51. This is the question. Robustatin. This is the basically your atorvastatin, robustatin. These are the statin drugs. So these are the drugs. These are the questions. This is the question with rational. This is the answer with rational. So क्योंकि वो लीवर मेटाबोलाइज करता है कहीं ना कहीं, so कहीं ना कहीं पेशेंट को बाद में मसल टेंडरनेस का फील होता है. So even though it is very rare, one of the greatest risk for client who's taking robustatin is myositis, muscle inflammation. ये इसका आंसर है. 52. This is the question. This is the answer. I will call my healthcare provider अगर severe headache होती है तो, अगर phenylazine sulfate कोई खाता है तो, and this is the rational. 53. This is the question. Losartan. It's a sartan category drug. These are the questions, and these three are the answers, and this is the rational. Losartan is a sartan. This is the sartan category drugs. Angiotensin 2 herb causes dilation of the blood vessels. Herbs बोलते हैं मैंने. Question number 52. These are the answers, and these are the rational. Question number 55. This is the question. These are the answers, and this is the feedback. Please read carefully. तसल्ली से वक्त लीजिए, टाइम लीजिए, इन्हें रीड कीजिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. Okay? Question number 56. The nurse performed teaching for a client being discharged on dexamethasone 0.7 mg per orally. So nurse determined teaching is successful. What? So the answer will be I will take my medication with breakfast. So dexamethasone with breakfast. Rational, a steroid medication is taken with food at breakfast to prevent gastrointestinal upset. Simple. Question number 57. This is the question. Continued infusion of milrinone. ये भी हम पढ़ चुके हैं गाइस, मैंने सब पढ़ा है आपको. Answer will be the through the sapid intravenous access line. Rational, it's here.
Next question number 58 in front of you. Schizophrenia, prescribed chlorpromazine. What will be the answer? Option number 1, 2, option number 6 and 7. Rational is here. Next question number 59. Question. The correct answer is all the above except hydrochlorothiazide. And this is the feedback. Question number 60. Trimethoprim, सल्फामिथोट्रेक्सोल, ये भी मैंने पढ़ा चुकी हूँ आपको. फोलेट कैटेगरी की ड्रग है ये, फोलेट इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक्स में. And these are the questions. I should take the medication with food, safe during pregnancy. And this is the rational. Next 61 question. Answer is, I guess I need to stop drinking wine. किसके साथ? अल्प्राजोलम के साथ. तो ध्यान रखना है. This is the rational. 62 question. Answer will be 1 and 5 and 6. This is the rational. Question number 63. I am taking propanol will be the answer. This is the rational. 64 guys. The answer is 2, 3, 4 and 6. This is the rational. 65 questions in front of you. Answer will be option number D. Rational is here. 66 question number this. Answer will be 2 and 3. 67 answer will be halothane and succinylcholine. Rational is here. And then guys, few more questions. Your 68, the answer will be face. The correct will be B, and the B is correct answer. Rational is here. 64, question number 64, 69, sorry. Answer will be option number A, and rational is in front of you. And then 70 question. Answer will be aspirin. Rational will be in front of you. 71 question number 71. And answer will be option number 1 is the correct answer. And this is the correct answer and the rational. And why not others are in front of you. So guys, that's all for today's lecture. So we are done with like pharmacology MCQs. These are very, very, very important MCQs. आप लोग बहुत रिलैक्स होकर थोड़ा ब्रेक लेके दोबारा से वॉच कीजिए और देखो किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, रैशनल क्या है उसका. इट विल गोना हेल्प यू. फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सब्जेक्ट. इट विल बी साइकेट्री. तो कल हम स्टार्ट करने वाले हमारा साइकेट्री. और आई होप फार्मा सबको समझ में आ गया है और फार्मा में किसी को कोई डाउट नहीं है एंड एवरीथिंग इज गुड. और गाइस, जो हमारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे उनके आंसर कीज मैं ग्रुप में डाल रही हूँ. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के आंसर की मैं ग्रुप के अंदर डाल रही हूँ. सो गाइस, टाइमिंग विल बी द सेम, टॉप लिस्टेड. सो गाइस, जो लाइव नहीं होगा, इट विल बी नॉट लाइव. यूट्यूब पे लाइव लेक्चर नहीं है. हमारा नॉर्मल जो कोर्स चल रहा है उसी के अंदर हमारी जो है क्लास देखने को आपको मिलेगी. सो लेट मी एंड दिस लाइव एंड देन विल टॉक.